Hello friends, and I welcome you again to TLA, the Language Academy. In today's session, we will be talking about pronouns. Pronouns, first of all, let's see what are pronouns. Generally, what happens is, जब हम कॉलेज में थे, अभी भी आप हो, अगर आप में से कुछ लोग, तो आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि हम कॉलेज कभी नहीं जाते, नहीं जाने का मन है या कुछ पर्टिकुलर रीजन की वजह से नहीं गए, तो हमारे फ्रेंड्स बड़ा काम आते थे हमारी प्रॉक्सी लगाने के लिए, राइट? तो यही काम जो है प्रोनाउन नाउन्स के लिए करते हैं, राइट? जहां नाउन नहीं आ सकता एंड जहां नाउन नहीं है, वहां पर प्रोनाउंस उनकी प्रॉक्सी लगा देते हैं, उनकी जगह ले देते हैं. तो प्रोनाउंस in other ways act as best friends, bosom friends, right? Close friends, confidant, basically what we say. They act for nouns, right? So in general aspect, this is the two ways wherein pronouns can be used is, first of all, wherein we don't have nouns, when we don't know, or the nouns are missing, or we can say when nouns are repetitive, right? बार बार repeat हो रहे हैं. याद है ग्रामर की किताबों में लिखा होता था, Ram goes to school, Ram is my best friend, Ram likes to eat ice cream, Ram 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 बार बार आ रहा है, hey Ram. So let's replace it with he. So he was a pronoun then, right? So this is what generally pronouns do for us, or for nouns generally, right? So now today's topic that we'll be discussing, or today we'll be talking about, is pronouns, right? So now what happens for pronouns is, generally you've seen that in case of pronouns that act, words that are used in case of words that are used to refer to persons, words that are used to, see, words, or you can say pronouns that are used to refer persons, to make a reference, or we must say to make a reference to persons in a sentence. That pronouns are termed as, or those pronouns, I must say, not that, those pronouns are termed as personal pronouns. These are personal. When we break this, we get personal. When we break personal word, we get a word person. So any pronoun that relates, or that refers, or that indicates, that makes an indication to person, will be personal pronoun. Generally, for example, these are he, she, it, they, him, her, hers, its, theirs, right? These are the frames. Now let's see, actually इनका पूरा एक table हम बनाते हैं. There is a particular पूरा एक, we make a framework. We'll see what are pronouns. There are few possessive cases which act as adjective as well. Okay, so first of all, जो personal pronouns हैं, these personal pronouns, these are divided into three different categories. I'll have to erase this. These are divided into three different categories, and these categories, they have three different cases. They have, like, there are three cases divided into three different frames. Like, first one that we'll be talking about will be subjective case. This subjective case is also known as nominative case. You'll find in many books it is quoted as nominative case as well. The second case that we generally see, or type we see, is objective case, which is also termed as accusative case. And the third case that we have is possessive case, that is also termed as genitive case. So these are the three cases, three frames, three types in which pronoun, or the personal pronouns, are divided. Let's talk about one by one what are the cases.
Now in case of subjective case, as the name suggests, जैसा कि हमें नाम बता रहा है subjective, मतलब वो जो subject के तौर पर काम आते हैं, right? They use as a subject in a statement. Here I'll also state first person, second person and third person. We're aware of first person, जो बात कर रहा है, speaker generally से, second person जिससे बात की जा रही है, and third person जिसके बारे में बात की जा रही है, right? Now in this case, if I take subjective case और first person में क्या आता है? I and we. In second person, it follows or it takes you. And in third person, we'll talk about he, she, it, and they. So this is the whole scenario of subjective case in case of first person, second person, and third person. Whereas when I talk about objective case, the frames that we use are, in case of I goes into me, we to us, you remains you here, he works for him, she her, and it remains it. Whereas they changes into them. And in case of possessive case, me, it works as my, it works as mine. us के केस में our और ours दोनों होता है, your and yours, his and his, her and hers. Here we have its and we don't have here anything, and then their and theirs. So this is the scenario, this is the framework of personal pronouns in case of subjective case, objective case, and possessive case. First person, the whole format, second person, and the third person. Okay. Now see, in case of possessive case, we have written my, mine, our, ours, your, yours, etc. In these, all of these which we have written here, all of them are not pronouns. Now, few of them are adjectives and the rest are pronouns. Now, how we'll come to know, how will we know what are adjectives and what are pronouns in this? Now, let's see, we'll check it out. Now, if I write a sentence, if I state a simple statement that, I'll erase this once again. If I say, this is my book, and if I say, this book is mine. We can also use this is his book, this book is his, this is our book, this book is ours. So any which ways it can go. We can take examples. Now in the first statement that said this is my book. Book here is noun. And our noun is being qualified by a word that is my book. Now noun को जब हम qualify कर रहे हैं या my जो शब्द है वो noun को qualify कर रहा है तो वो adjective का काम कर रहा है. क्या noun को pronoun qualify करता है? No. Pronoun तो noun की जगह लेता है, वो noun को qualify नहीं करता further, right? तो यहाँ पर my adjective है, whereas in this sentence mine is pronoun. So these cases that we have written here in case of possessive pronouns, these are possessive adjectives. और ये side, these are possessive pronouns. So I hope it is evident, it is pretty clear to all of you that these are adjectives, why are they adjectives, and these are possessive pronouns. So this was the whole pattern. These are the all personal pronouns जिनके बारे में हम बात करेंगे अभी आगे, right? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अपने रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है? हम अगर देखें प्रोनाउंस में हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात की है, राइट?
नाउ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनका यूज क्या है? देखिए स्टेटमेंट में क्या होता है, प्रोनाउंस अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमें प्रोनाउंस बहुत सारे मिले, एक नहीं 2 मिले या 3 मिले, तो प्रोनाउंस को सीक्वेंस कैसे देना है, सेट कैसे करना है सेंटेंस में, वो हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की मदद से पता चलता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा सेंटेंस गुड मैनर्स की बात कर रहा है, या फिर हम कहेंगे अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चल रहा है या पॉजिटिव चीज की बात कर रहा है, तो जो ऑर्डर फॉलो किया जाता है प्रोनाउंस का वो होता है पहले आते हैं सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। मतलब जो ऑर्डर होता है वो होता है 2 3 1। अगर सेंटेंस पॉजिटिव क्राइटेरिया से जा रहा है या फिर उसमें गुड मैनर्स की बात हो रही है, ओके। वेयरएज अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है या फिर उसमें बैड मैनर्स की बात की जा रही है, तो हमारा ऑर्डर होगा 1 2 3, which means first person, second person and then our third person, right? Now नेगेटिव सेंटेंस इसलिए मैंने बैड मैनर्स लिखा है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस का मतलब सिर्फ नॉट और नेवर से नहीं होगा। अगर वहां पर स्मोकिंग की बात हो, गैम्बलिंग की बात है, रॉबरी की बात है, तभी भी क्योंकि वो बैड मैनर्स है, ऑर्डर 1 2 3 लिया जाएगा, सेंटेंस को नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। ओके, सो इफ गुड मैनर्स पॉजिटिव 2 3 1, अगर नेगेटिव है बैड मैनर्स है तो 1 2 3। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। ओके, लेट्स सी वन एग्जाम्पल। इफ आई से दैट in case I write, see it is not necessary, first of all let me tell you, it is not necessary कि हमें ये लिखा ही हो, हमें सारे ही पर्सन्स मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हमें दिए ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है इनमें से कोई एक पर्सन मिसिंग हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, it will not at all matter, right? Because if we have 2 and 1 we'll arrange 2 and 1, if we have 3 and 1 we'll arrange 3 and 1, if we have 2 3 1 we'll arrange 2 3 1. Okay, now for example if I say that I and he are going for a movie. I and he are going for a movie, or I'll make it, okay, let's take it this way only. I and he are going for a movie, right? In this statement, this is what? This is a positive statement. Now, positive statement will take what? Order क्या होता है? In case of positive or good manners, 2 3 1. अगर हमें यहाँ पर missing भी है, missing है ना, right? हमारा कौन सा पर्सन मिसिंग है? सेकंड पर्सन मिसिंग है, और हमने लिखा है फर्स्ट और थर्ड, सो 1 3 नहीं, हमें चाहिए 2 3 1, which means 2 is missing, so we'll get 3 and 1. So what we'll do, we'll change their places, that is he and I, right? और अगर मैंने इस सेंटेंस को ऐसे लिखा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट दिस सेंटेंस, क्योंकि ये तो पॉजिटिव था, अगर मैंने लिखा होता he and I did a robbery, अब रॉबरी तो बैड मैनर हो गई, राइट? अब बैड मैनर्स के केस में हम क्या करते हैं, हमारा ऑर्डर होता है 1 2 3. सो इन दिस केस इट विल बी, हमने 3 और 1 लिखा है, क्योंकि 2 मिसिंग है तो ऑर्डर हुआ 1 and 3. सो वील टेक I and he did a robbery. So if a sentence is positive, it will be 2 3 1. If our sentence is negative, it will be 1 2 3. Okay, now if in case it happens like, हमारा जो हमने फर्स्ट पर्सन लिया वो कैसा है? सिंगुलर है, I, ये सिंगुलर है। अगर कभी स्टेटमेंट ऐसा हो we, you and they are
London tomorrow. Now, in this sentence, I have used first person, I have used second person, and I have used third person. But my first person is in plural form. Now, when this happens, this sentence is a positive sentence, but now I have used first person in a plural form. So, what happens is, in such cases wherein जहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन या फिर हम कहें प्लूरल सब्जेक्ट्स हो जाए, यहाँ पर भी प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स हो जाए, प्लूरल सब्जेक्ट्स के केस में हमारा जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस, उसका भी ऑर्डर हो जाता है 1 2 3. याद रखिएगा, एन एक्सेप्शन, दिस इज एन एक्सेप्शन. अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस में भी हमारा ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3. ओके, तो इन दिस सेंटेंस इज रिटन 1 2 3 because this is a positive sentence first of all and our subjects are plural aspects. Okay, so this is the criteria where we talk about where we talked about order of personal pronouns. Order, right? The order, अगर एक से ज़्यादा हैं तो उनका order कैसा होगा sentence में. So in case now if I talk about general rules that are related, we have discussed about what are personal pronouns, the words that act as personal pronouns that refer to persons. Now let's talk about the rules that we generally see. In case of verbs which are to be verbs, they are is, am, are, was, were. In case of to be verbs, what we generally do is we see personal pronoun, and this personal pronoun should be in nominative case, or I must say subjective case. अगर कभी हम to be verbs के साथ personal pronoun की बात करेंगे, अगर attached है sentence में, इनमें से किसी के साथ भी, तो वो कौन से केस में होगा? Nominative केस में होगा. Like for example, if I say that it is me who have seen you there. So in this sentence हमने यहाँ देखा क्या लिखा है? is, जो कि है हमारा to be verb, और to be verb को अगर फॉलो कर रहा है पर्सनल प्रोनाउन तो फिर वो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में होगा. लेकिन मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो करेक्शन करने के लिए यहाँ लिखा जाएगा I. और हम देख रहे हैं क्योंकि I लिखा है इसलिए यहाँ पर have लिखा है, has नहीं लिख सकते. It is I who have seen you there, right? Also, this is to be verbs, इसलिए हम पर्सनल प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस ले रहे हैं. अगर कभी हमें स्टेटमेंट में प्रेपोजिशंस मिलते हैं, अगर कभी हमें स्टेटमेंट में प्रेपोजिशंस मिलते हैं, I hope you might have taken a screenshot or you might have noted it down. We'll now we'll be moving on our next point. Okay, now in case अगर आप कभी सेंटेंस में देखते हैं कि प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो प्रेपोजिशन के साथ जो पर्सनल प्रोनाउन आता है, अगर तो इस्तेमाल हो रहा है, इफ एनी, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है. इट इज इन ऑब्जेक्टिव केस. अगर प्रेपोजिशन के साथ पर्सनल प्रोनाउन है सेंटेंस में तो फिर वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से बिटवीन यू एंड आई दिस मैटर कैन बी रिजॉल्व्ड easily. तुम्हारे और मेरे बीच में ये जो इशू है, ये जो मैटर चल रहा है,
ये आसानी से दूर हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। Between is a preposition. Preposition को फॉलो करने वाले पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होने चाहिए। यू तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, वाई? बिकॉज यू ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहता है और सब्जेक्टिव में भी। बट आई अभी हमें नॉमिनेटिव केस में दिया है, तो इसे हम ऑब्जेक्टिव केस बनाने के लिए क्या करेंगे? मी। So correct sentence will be, between you and me, this matter or this issue can be resolved easily, right? So these are the frames wherein you use personal pronouns, right? I have told you about the personal pronouns, I told you about their order, and then I've told you about the frames wherein you use objective case and a frame where you use nominative case. Now we'll discuss a few other points in our next sessions. In the coming sessions, we'll talk about other types of pronouns and few more important rules based on pronouns. Till then, goodbye. Thank you.